कुछ साल पहले मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, प्रोजेक्ट हैप्पीनेस। उस प्रोजेक्ट में 15 महीने की ड्यूरेशन में आई फेल्ड 1600 टाइम्स। 1600 बार मैं फेल हुआ, पर फिर भी मैंने वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया। आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे, एंड इफ यू स्टे ऑन टिल द एंड यू विल लर्न 6 ways in which you can navigate failure. And I'll also share with you a story, a beautiful story of a 11-year-old girl from the Happiness Project. If you're new to this channel, support us by subscribing to this channel. We are on a mission to touch a billion lives positively. और उन बिलियन लाइव्स में अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो आप हमारे इस मिशन में हमारा साथ देते हैं। अगर आप यहाँ पहले भी आए हैं और फिर से देख रहे हैं तो आई वेलकम यू अगेन एंड एंजॉय दिस वीडियो। पुट इन द कमेंट सेक्शन और किस बारे में आप मेरे से सुनना चाहते हैं, किन और चीजों पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। इन 2016 जब मैं एक वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर था, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या प्रोजेक्ट करूं जिससे मैं अपने फोटोग्राफी स्किल्स को रिफाइन कर सकूं। पहले मैंने सोचा कि मैं मॉन्यूमेंट्स की फोटो लेता हूं, फिर पेड़ पौधों फूलों की सोचा, बट इट वाज जस्ट नॉट क्लिकिंग फॉर मी। एंड देन आई वेरी क्लियरली रिमेंबर जुलाई 2 2016 को, जब मैं इट वाज माय बर्थडे एंड आई वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम अ मॉल। एंड जब मैं मॉल में इतने सारे लोगों को देख रहा था, आई थॉट टू माई सेल्फ, व्हाई डोंट आई टेक पिक्चर्स ऑफ पीपल। आई एंजॉय स्पीकिंग टू पीपल, and it'll give me a skill of taking photographs of people, and that'll be something I'll enjoy. And the other thing that I wanted to explore was कि हम 7.5 बिलियन लोग इस धरती पे हैं, हमारे लिए हैप्पीनेस क्या मीन करती है, what does happiness mean to us, and what makes us happy. And then began my journey over a 15-month period, जिसमें मैंने स्ट्रेंजर्स को रीच किया। उनको सड़क पर, मॉल में, कहीं भी मैं रोक लेता था और उनसे पूछता था, What is happiness to you? What makes you happy? मैं उनके साथ एक लंबा कॉन्वर्सेशन, कभी एक बहुत छोटा कॉन्वर्सेशन करता था, और आई यूज्ड टू टेक देयर पिक्चर्स, and everything is on my Facebook and Instagram, and you can go. I'll put the links in the comment section and in the description of the video below. But उस एक्सपेरिमेंट के दौरान, उस प्रोजेक्ट हैप्पीनेस के दौरान, उन करीबन 400 दिनों में मैंने करीबन 2000 से 2500 लोगों को अप्रोच किया होगा, टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम. And just imagine a stranger walks to you in the middle of the street, in the middle of a conversation that you're having with someone, and starts to wanting to talk to you, and then wants to take a picture of you. How would you feel about that? बहुत बार ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने मुझे इग्नोर किया। उन्होंने कहा, अरे इसको क्या पागलपन सवार हुआ है जो हमसे हैप्पीनेस के बारे में पूछ रहा है। कुछ लड़कियों ने शायद ये सोच के मना कर दिया होगा कि ये हमारा पीछा कर रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारी फोटो को पता नहीं कैसे यूज कर ले। कुछ लोगों ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो बात ही नहीं करना चाहते थे। और कुल मिला के आई वुड से इन दोज 1.5 years, in reaching out to 2000 people, I would have failed at least 1600 times. 1600 people would have said no to me, day in and day out. हर रोज मैं गर्मी में, सर्दी में, धूप में, किसी भी सिचुएशन में रोड पे उतरता था, लोगों को रोकता था, उनसे बात करता था, but people would say no. 1, 2, 3, 4, 5, sometimes in a row 10 to 15 people would say no to me, that Utkarsh, we don't want to talk to you. Who are you? Who are you, stranger, coming as IgnitedNeurons and wanting to take pictures? And it was a very difficult situation, because अगर मैं उस फेलियर को अपने ऊपर हावी होने देता तो मैं शायद ही वो प्रोजेक्ट पूरा कर पाता। But throughout that project, throughout those failures, I kept going back because I knew कि वो 10-15 के मना करने के बाद जो एक इंसान हाँ बोलता है, उससे बात करने की खुशी उन सब 10-15 की जो एक तरीके से डिजेक्शन की फीलिंग होती है, उसको खत्म कर देती है। सो फेलियर से बचने का एक ही तरीका है, एंड वो है परसिस्टेंस। क्या आप परसिस्टेंट हैं अपने पाथ पे? क्या आप चाहते हैं कि आप जो करने उतरे हैं वो पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? इफ यू गिव अप इन द मिडल, इफ यू क्विट, then you're failing, then you're not persistent enough. I told you, right, that I'll share with you 6 steps for how you can navigate failure, and then a very special story from one of those days where Project Happiness में मैं एक छोटी सी बच्ची से मिला था, 11 साल की। I still get goosebumps whenever I think of her, so I'll share that story with you and her picture as well. But this is a good time to subscribe to the channel, because your clicking on that subscribe button and the bell icon truly matters to me. The first step to navigating failure is persistence. As I was just telling you, अगर आप उस गोल के लिए persist नहीं करेंगे, if you don't stay on that path for long enough, then you quit and then you fail completely. Because otherwise, anything that comes up in your way, those are just roadblocks. वो एक छोटे कॉमास हैं, फुल स्टॉप उनमें से कोई भी नहीं है। और बहुत सारे कॉमा के बाद भी अगर आप आगे बढ़ते रहते हैं और जीत जाते हैं, तो वो फेलियर नहीं होता है। So the first key is to persist. The second one is कि आप लाइफ में जो भी गोल लेते हैं उसको एक बहुत ही ऑडिशियस बड़ा गोल बनाएं।
छोटे गोल्स में क्या मजा है, फिर क्या आप अचीव करेंगे? It's there's this saying, right, which is inaccurate according to the laws of physics, but if you want to fall into the stars, why don't you gaze for the moon? एंड उसी तरह आपके जो गोल्स होने चाहिए वो बहुत ही बड़े होने चाहिए, ऑडेशियस होने चाहिए, कि अगर आप उनके एंड रिजल्ट तक भी नहीं पहुंचे तो जहां आप हाफ वे भी होंगे तो भी आपने इतना कुछ अचीव कर लिया होगा कि आप बहुतों से बहुत बेटर होंगे। फेलियर आपके आसपास भी नहीं भटक पाएगा। द थर्ड स्टेप इज दैट यू हैव टू ओन योर एफर्ट। अगर आप एक ओनरशिप माइंडसेट से काम नहीं करेंगे लाइफ में, then you will not be able to achieve anything. Then failure will be very easily achievable for you. Instead of that, if you own that मैं अपना failure और success सब अपना effort सब own करके आगे बढ़ूंगा, then no one's going to stop you from achieving what you want to do. So have an ownership mindset in everything that you do in your life. जो मेरे फिफ्थ और फोर्थ पॉइंट्स हैं वो बहुत ही एक तरीके से कोरिलेटेड हैं, एक दूसरे को खत्म करता है और दूसरा पहले को खत्म करता है। And that is, don't ever doubt yourself. Sometimes we just undersell ourselves. हम सोचते हैं कि ओ मैं ये नहीं कर पाऊंगा कि मेरे को तो अच्छे से नहीं आता, या मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा कि उसने मेरे से बेहतर कर लिया। बट हमें इस सेल्फ डाउट को खत्म करना है, और उस सेल्फ डाउट को खत्म करने के लिए नंबर 5 इज टू बिलीव इन योरसेल्फ। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, दैट कुछ भी हो जाए, मैं आज अच्छा नहीं कर पाया लेकिन मैं कल जाके इससे बेहतर करके दिखाऊंगा। मैं आज, अगर विराट कोहली का एग्जाम्पल लें, अगर वो आज 0 पे आउट हो जाते तो वो ये नहीं करते कि अपना बैट फेंक के बैठ जाते हैं कि मैं तो क्रिकेट खेलना छोड़ रहा हूँ कि मैं आज 0 पे आउट हो गया। He goes out back to the field the next day and practices harder and starts to play again and scores those runs. And that's what you have to do. You have to persist. You have to own your effort. You have to believe in yourself. You have to curtail your self-doubt. The final one, the most important one, is that हमारे अंदर हमेशा एक fear होता है। Fear which tells us that हम जीत नहीं पाएंगे, fear that tells us कि हम fail हो जाएंगे, fear that tells us that हम enough नहीं हैं। हमें उसको completely reverse करना है, उस fear को हटा के हमें courage से भरना है, and we have to persist on that path to success, and failure is just a stride, just a stepping stone on that path. So since you're still here, you've seen the 6 steps to navigating failure. Here's the story of the young girl that I was telling you about. So एक बार, it was a Sunday morning, I clearly remember that, and I'd gone to take some grocery for my home, and even उस time में मैं grocery लेने भी जाता था, अपना कैमरा साथ लेके जाता था. So as I was buying something and getting back into my car from the vegetable vendor, I saw कि वहाँ पर कूड़े का एक ढेर था। उस कूड़े के ढेर पे एक बच्ची बैठी हुई थी जो वहाँ से कुछ सब्जियां निकाल रही थी। And now as I looked at her, I thought कि I cannot go and ask her what happiness is to you, because that might just demean her, that might just make her feel hurt or make her feel like, what is wrong with this person कि मेरी हालत देखो, मैं कूड़े में से सब्जियां निकाल रही हूँ and he's asking me this question. I sat into my car, I stayed in that car for a few minutes, and I looked at her again. And just something came to me which said, Utkarsh, you have to go and talk to her. I got out, I went to her, and I asked her, what's your name? And I think her name was Saraswati, if I remember correctly. And I said, Saraswati, aap kya kar rahe ho? What are you doing? And she said, I'm collecting the vegetables which are still not rotten enough so that my family can eat something for lunch and dinner today. She was out of that garbage pile, out of the vegetables that were thrown because they were rotten. She was collecting vegetables out of that garbage and making sure that her family gets a lunch or a dinner today. And that just it just like was so difficult for me to then find that courage to ask her this question ki Saraswati, aapke liye happiness kya hai? What makes you happy? But as I was connecting with her, as I was looking into her eyes and seeing the spark that was within her, I asked her, Saraswati, what makes you happy? कैसे आपको खुशी मिलती है? And she said, भैया मैं जब भी किसी को हंसते हुए देखती हूँ मुझे खुशी मिलती है. And in that moment, I was speechless. And I could not muster the courage to say anything to her, because here is a girl, 11 years old, who's collecting vegetables from the rotten lot of vegetables to feed her family. And when I ask her what happiness is to you, she says, happiness to me is to see anyone who's smiling. It was such a beautiful answer. I thanked her. I spoke to her for a few more minutes, and then I just went back into my car and sat there for at least 5 to 10 minutes. And it's just beautiful that how this little girl was able to reframe her happiness and see it in the eyes and smiles of other people. Who are you and I to complain कि हमारे पास जिंदगी में कुछ कमी है, कि हमारी जिंदगी में failure है, कि हमारी जिंदगी में problems हैं?
I think there's so much to learn from these lessons that I derived, and I'll continue to share those with our community here. So that was the video for today. If you liked the message, if you liked the video, I would truly appreciate if you like and comment under the video as to what more can I do and share for you. And definitely subscribe to the channel if you're new here. And yeah, let's inspire and ignite that spark that's within you and touch a billion lives positively.